चंद दिन पहले मुझे पूरा इल्म हो चुका है। तो पहले जरा गौर से सुने मैं क्या किया है। मैंने नौजवानों, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। और इस वीडियो में मैंने पिछली गर्मियों से जो ये मेरे खिलाफ साजिश हुई, जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया इस वीडियो में। देखिए, फिर से सुन लें और चुप करके सुने, मैं आपके सामने अहम बात कर रहा हूं। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, साजिश है, और साजिश ये है कि उन्होंने समझा है कि ये इमरान खान हमारे रास्ते में रुकावट है और इसको हटाना चाहिए, मुझे मारने की साजिश है। और इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, क्योंकि मैं तो इसको जहाद समझता हूं, मैं तो सियासत नहीं समझता, मैं तो अपने अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कुछ होगा तो मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को चाहता हूं कि आपको पता चले कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था। बाहर बैठ के कौन इस साजिश का किरदार था और मेरे मुल्क में बैठ के किस किस ने साजिश। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। On the 7th of March, Becky, Under Secretary of State in the US, who's responsible for South Asia, he calls our ambassador, a meeting between our ambassador in Washington. He tells our ambassador in an official meeting, there are note takers on both sides. He tells the ambassador that unless you get rid of your Prime Minister Imran Khan in a vote of no confidence, which by the way hadn't been tabled as yet, but he seemed to know about it, he said, unless you get rid of him, Pakistan will suffer consequences. And then goes on to say, of course, if you get rid of him through the vote of no confidence, all will be forgiven. Such arrogance, apart from anything else. By the way, Becky, this guy should be sacked for bad manners and sheer arrogance. Imagine telling a country, an ambassador of a country of 220 million people that you get rid of your prime minister. So this is where it started. The next day, this vote of no confidence is tabled in our parliament. And then follows... Why have you never made this public before? You are being very specific about what you allege was said. Well, Becky, I put it in front of our cabinet. This cipher was read out in the cabinet. There are minutes of the cabinet.
Then I presented it in our National Security Council, where all the service chiefs were present. Why did I present them? Because this was a blatant intervention in the internal affairs of Pakistan, a regime change. As Prime Minister at the time, did you get in touch with the US President, with the US Secretary of State? What happened? The National Security Council decided to give a démarche, protested to the US in Pakistan and in Washington. We issued it. This is all minuted. Then we presented it to the Parliament Committee, then the Speaker of Parliament, then the President of Pakistan, who has this cipher. He sent it to the Chief Justice of Pakistan that there should be an inquiry held in this blatant interference in the internal affairs of Pakistan.